Hello everyone, this is Divya. Welcome to my channel Banking Goals. In this lecture, we are going to see the urban cooperative banks. Now, generally, urban cooperative banks are those credit cooperative societies which work in urban areas. Okay, now in most of the states, इसका कोई clear definition नहीं है. There's no clear definition of urban cooperative banks in most of the states. But in the state of Maharashtra, all those credit cooperative societies जो banking activities perform करते हैं under the section 277F of Companies Act 2013 and Section 5B of Under Banking Regulation Act 1949. ये दो सेक्शन से अंडर अगर बैंकिंग एक्टिविटीज एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कंडक्ट करता है तो उसको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बोला जाता है. RBI also called it as primary cooperative bank or primary cooperative society. Basically, it is divided into two parts, that is unit banking type and branch banking type. There are two types. And the urban cooperative bank specifically performs in urban areas. It is confined to a particular locality, community or profession. कोई एक profession के लिए अगर है, कोई एक community के लिए वो cooperative bank form हुआ है, but it is carrying out the banking activities, then such credit cooperative society is urban cooperative bank. तो वो एक पर्टिकुलरली प्रोफेशन के लिए, कम्युनिटी के लिए, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए, एक पर्टिकुलर अर्बन एरिया तक सीमित है, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक. देयर आर द फीचर्स ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इज वेरी मच सिमिलर टू द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. तो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स वही है. इट इज वेरी सिमिलर दैट द यूजर कंट्रोलर बेनिफिट कंसेप्ट इज कॉमन. लाइक जो यूजर है वही कंट्रोलर है, the same controller is the beneficiary. मतलब जो products है, like when the loans are provided, it is provided to the users, it is provided to the owners only. So it is limited to the controllers, it is limited to the owner. The user owner controller benefit is provided to the same person. Second is the democratic management control, like democratic member control, like the members they elect the representatives among themselves. उन्हीं के बीच में से कोई members choose करते हैं and they perform the role of controller. वो they act as a board which is represented among by the members from themselves. Third is that it is rooted mostly in local areas. कोई local area, एक particular area, as I have earlier told you that एक कोई profession, एक community, एक local area तक it is mostly rooted in such areas. जो allocation है funds का, which is the fourth feature, that is allocation of funds. सबसे पहले it is important that after the deduction of cost from the profits, it is very much essential that एक कोई reserve, general reserve, it is must for a cooperative bank to be kept. Similarly, ये जो cooperative banks है, the main purpose is financial inclusion. That is why it is mostly supported by the government, और इसका ज़्यादातर कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और इसको अच्छे से रेगुलेट किया जाता है जस्ट बिकॉज इट इज द मेन एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट विच सपोर्ट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द वीकर सेक्शंस एज वेल एज जहाँ पे मोस्टली नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटीज कंडक्ट नहीं की जाती. जो नॉर्मल बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स है, दैट डू नॉट कैरी ऑन एक्टिविटीज इन सच एरियाज. स्पेशली उसी एरिया में ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं. उसके अलावा द एक्ट एज इंटरमीडियरी बिटवीन द प्लानिंग कमीशन, द स्टेट बैंक, द स्टेट गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट. इन सबके दे एक्ट एज इंटरमीडियरी. दे कलेक्ट मनी फ्रॉम, दे गेट funding from central government, state government, as well as NABARD, as well as the अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, एज वेल एज उनकी खुद की फंडिंग जो मेंबर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें से, और डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स जो इशू करते हैं उससे जो फंडिंग आती है उससे वो अपनी एक्टिविटीज कैरी ऑन करते हैं. नेक्स्ट इज लिमिटेड प्रोडक्ट्स. दे हैव लिमिटेड प्रोडक्ट्स इन their portfolio because they mostly provide credit to the weaker section, they mostly provide credit to their own owners, इसलिए उनका जो प्रोडक्ट फोलियो है वो बहुत ज़्यादा कम है. सिमिलरली जो इंटरेस्ट रेट्स है, इट इज़ डिसाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड जैसे कमर्शियल बैंक्स के हैं वैसे ही रहेंगे, बस थोड़ा कम ज़्यादा रहेगा. एंड इट इज़ डिसाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सिमिलरली दे हैव टू मेंटेन द रिजर्व रेशियोज similarly like the commercial banks.
जैसे उनको CRR, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट जो उनकी है कमर्शियल बैंक्स की, ऑन द सेम हैंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को भी वो सारे रेशियोज मेंटेन करने पड़ते हैं विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. दे हैव टू कीप द सरप्लस, दे हैव टू मेंटेन द रिजर्व्स विद देमसेल्व्स एज वेल. जैसे हमने पहले सुना है कि इसका जो इनकॉर्पोरेशन है, जो इसका फॉर्मेशन है, इट इज अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, वेरएज इसका जो बैंकिंग एक्टिविटीज का रेगुलेशन है, लाइसेंसिंग है, इट इज with the Reserve Bank of India, or it is governed by the Reserve Bank of India Act as well as Banking Regulation Act. So this was for the urban cooperative banks. It works in the same sense as a commercial bank, but their working criteria is little bit restricted, and they mostly work for the benefit of the society as well as benefit of their own members, rather than they mostly do not involve the non-members. They mostly do not provide credit to the non-members, but most of the cases में members को ही credit provide किया जाता है, पर कुछ cases में they even allow the credit to the non-members of the cooperative bank. So this much was for urban cooperative bank. In the next video we'll be learning about NABARD, that is National Bank for Agriculture and Rural Development. We'll see its working, we'll see its functions as well as its formation. So do subscribe my channel, press the like button, share the video, and thank you so much for watching.